to my channel. Guys, I'm back after a long time because I was busy for some work. Now I'm free and so I thought let's make a video. So guys, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरा हेयर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट और लंबे है और कर्ल करने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखी हूँ जहाँ पे वो लोग ब्रेड के ज़रिए कर्ल कर रहे हैं। सो आई थॉट नॉट मी। सो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ फ्रेंच ब्रेड ओवरनाइट हीटलेस कर्ल्स। सो इसके लिए बस 3 प्रोडक्ट्स। पहला यूज़ करूँ मैं पैंटीन ओपन हेयर मिरेकल। आप कोई भी सीरम कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपके हेयर के लिए बेस्ट है। सेकेंड अ कोम एंड थर्ड few rubber bands. I think 6 से काम चल जाएगा। So guys, ज़्यादा ना बोलते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। Let's get started. फाइनल मैं कल बताऊंगी ये आफ्टर ब्रेड। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मेरे वाले बाल थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बहुत ज़्यादा टैंगल्ड हो जाते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखना कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है तो थोड़ा ध्यान से। और ये तो बन गया है और आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर होल नाइट एंड मैं आऊँगी कल सुबह विद रिजल्ट्स। ये मेरे बाल पे काम करते हैं कि नहीं और करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो भी बहुत अच्छी बात है। क्या करूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू टुमारो। सो गाइज आई एम बैक आफ्टर अ होल नाइट एंड एक रात बिताने के बाद मैं अपने ब्रेड को खोलने वाली हूँ, देखने वाली हूँ वाकई काम करता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं।
Oh my god, this is so good! Yeah, मुझे बहुत पसंद आया और ये बहुत ही अच्छा एक बीच वेव्स वाला लुक दे रहा है. हाय गाइस, यू शुड ट्राई दिस वन. अगर आपको हीट पसंद नहीं है आपके हेयर पे तो आप ये ज़रूर ट्राई करें. रात भर रख दीजिए और सुबह आप रेडी. So guys, that's all about it. ये था मेरा व्यूज़ ऑन दिस ब्रेड्स. एंड आप अगर ट्राई करते हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. एंड अगर आपको कोई और भी कुछ ट्राई करना है तो वो भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. आई विल लव टू डू इट फॉर यू गाइज. एंड इफ़ यू हैव एनी ideas for couples then please let me know. Then me and Sure we would love to do it for you guys. And yeah, that's all about for today's video. I'll see you next time. Till then, take care, bye bye, and